Good morning, my dear students. All of you are most welcome in this morning session of English Literature by Dr. NARESH AGGRWAL. I am going to represent a very beautiful poem. The title of the poem is I Am Getting Old Now by Robert Croix. He is a Canadian poet and he is supposed to be postmodern literary figure, and his poems are full of self-reflexive style, playful style. Ironic touch is also seen in his poems. So dear students, the poem is I Am Getting Old Now. The poem brings, साउंड आ रही है, थोड़ा आवाज़ें आ रही हैं, क्लासरूम में चल रहा है ना स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं. Let me start. The poem brings out the poet's awareness of his advancing age. बढ़ती हुई उम्र के बारे में बहुत वो सचेत है. As he grows old, the memories of the past pain him since they are lost. The first part of the poem symbolizes his dream about his childhood and his love and affection toward his mother. He recalls in his dream the day when he was standing in the garden over the hill with his mother and was playing amidst the pea plants. मटर की बेल लगी हुई थी वहाँ, माँ के साथ था पहाड़ी के ऊपर और अपने गार्डन में खेल रहा था. Later, जो मदर के बारे में बता रहा है, she held the peas in her apron which they picked together. The poet could see the love and affection of the mother in her eyes when she compares him to be a bad weed, implying that he grew very fast, and that too like a bad boy. Every mother in a loving aspect addresses her child in the same manner, bad boy, bad girl, okay, growing very fast. A loving affection of a mother to a child. So it is very normal and natural. However, this is said in a rather endearing way. It is natural for mothers to speak about their naughty children in this manner. The second part of the poem symbolizes that he is close to that. He realizes the inevitable fates and accepts death as a friend. The poet seems to suggest that he is waiting for death, watching out for it as one who waits to meet a long lost friend you had almost forgotten. As he thinks about death, he is again transported back to his old memories and dreams of his happy childhood. Dear students, in such a beautiful manner, nostalgic feelings are put forth. The memories of the past are put forth, and the poet is going to remember all his ruby moments spent in the memory of his friend in his own garden. In this poem, the poet says that he is getting old, and he can tell that as he has started dreaming a lot about his mother. As he is getting old, he thinks about the past and about all the sentimentals and important memories to him. The poet said that he had a dream about his mother, and in the dream, she was in the garden near the hill behind his childhood house. He says that she was just standing and he was playing with the pea vines. In the dream, neither of them moved. This shows that it was a picture from the past. Nostalgic feeling, past feelings means. As neither of them moved in the memory, the poet tries to figure what exactly they were doing. Actually, in the first part of the poem, it symbolizes his dream about his childhood and his love and affection toward his mother.
Further, the poet said that he knew he was watching, and that he also knew that she watched him grow up like a bad weed. In a beautiful manner, a mother addresses her child. It is very natural and normal. Later she held the peas in her apron. आवाज़ आती रहती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा रहता है, इसलिए डोंट गेट डिस्टर्ब्ड. Which they had picked together. He could see the love and affection of the mother in her eyes when she compares him to be a bad weed, implying that he grew very fast, and that too like a bad boy. This is said in rather endearing way. It is natural for mothers to speak about their naughty children in such manner. Here we see that the poet is getting old now, and he cannot say he is happy, as he did not have a good time growing up, and he did not grow up to be the man that his mother wanted him to be. Further, the poet is getting old now, and he cannot say he is happy, as he did not have a good time growing up, and he did not grow up to be the man that his mother wanted him to be. प्रत्येक माँ चाहती है कि उसका बच्चा, उसका लड़का बहुत ही बड़ा होकर के सिंसियर मैन बने, शरारती सा ना बने. ये हर माँ की इच्छा होती है. द सेम फीलिंग्स आर बीइंग पुट फॉर्थ हियर, एडवांस्ड हियर इन द टेक्स्ट ऑफ द पोएम. He does not think about death as an enemy. He was calm and not afraid of death. The poet gives the idea that he is almost waiting for death, watching out for its coming as one awaits the meeting with a long lost friend one has almost forgotten, and as he does so, once more he is transported back to his old memories and dreams of his happy childhood. Thus we see in the second part of the poem itself, the poem symbolizes that he is close to death. He realizes the inevitable fates and accepts death as a friend. So dear students, let me read the text of the poem for all of you. I am getting old now. I can tell, I can dream a lot of my mothers. बूढ़ा होने जा रहा है, कभी उम्र बढ़ रही है, सपना देखता है. ओके, आई कैन टेल, बता सकता, आई कैन ड्रीम ए लॉट माई मदर्स. इन माई ड्रीम लास्ट नाइट शी वाज इन द गार्डन. सपना देखा, और सपने में गत रात्रि में जो सपना देखा उसके अंदर मदर किस में थी? गार्डन में थी, ओवर द हिल, और वो पहाड़ी के ऊपर जो गार्डन है बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे बना हुआ है. शी वॉज स्टैंडिंग, वहाँ खड़ी हुई थी. आई वॉज प्लेइंग इन पी वाइन्स, वो मटर की बेल लताओं से खेल रहा था. वी वर बोथ हैप्पी, दोनों माँ बेटे बड़े खुश थे. नाइदर ऑफ अस वुड मूव इन द ड्रीम, और ऐसा नहीं था कि हम दोनों में से कोई भी मूव इन द ड्रीम, कोई ऐसा स्वप्न में, दिवसपन में या कहीं खो जाएगा. परहैप्स आई वॉज नॉट प्लेइंग, खेल नहीं रहा था. आई वॉज नीलिंग टू पिक पीस, और वो घुटनों के बल, नी के बल झुका हुआ था मटर को उठाने के लिए. मे मदर हेल्ड इन हर एप्रन द पीस, और माँ ने, और वो एप्रन में, अपने पल्ले के अंदर, कपड़े में, चुन्नी वगैरह या किसी भी कपड़े के अंदर वो मटर के दाने रखे. वी हैड पिक्ड टुगेदर, हमने एक साथ रखे. शी वॉज स्टैंडिंग स्टिल, बहुत खामोशी से, शांति से खड़ी थी. आई न्यू शी वॉज वॉचिंग मी, मुझे बहुत ही ध्यान से वो निहार रही थी. शी वॉज वॉचिंग मी ग्रो, वो मुझे बढ़ता हुआ भी देख रही थी कि उम्र में मैं कैसे बढ़ रहा हूँ. लाइक ए बैड वीड, जिस प्रकार से पेड़ पौधे के अंदर खरपतवार उग जाती है ना, तो वो अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं वीड कहलाते हैं, वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं. मूल बड़े पौधों से ज़्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं. अनवांटेड
प्लांट्स। तो उसी तरह से मैं भी बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ। शी लाइक टू से दैट प्लीज्ड हर, ये बात उसको कहने में बहुत अच्छा लगता था। प्रत्येक माँ अपने बच्चे को ये बात कहती है, नेचुरल नॉर्मल तरीके से कहती है। माँ का प्यार, स्नेह, सत्कार, दुलार सब इन बातों में दिखता है। आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। आई वुड नॉट से आई एम हैप्पी, मैं नहीं कह सकता कि वो हैप्पी है। सरिन इज एन एडिकेट वर्ड, बस मैं एक ही शब्द कहूँगा, सरिन। सरिन का मीन्स सबलाइम, बहुत ही खामोश शानदार तरीके से, एलिगेंट। सरिन, सोब्राइन, सोब्राइटी के लिए शब्द प्रयोग होता है। डेथ इज़ नॉट क्वाइट, और मृत्यु की ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल कोई ऐसा डर के रूप में, द एनिमी इट वाज, कि कोई उसको लग रही हो मृत्यु दुश्मन के रूप में। इट इज़ ए काइंड ऑफ वॉचिंग, ये तो एक वॉचिंग है। डेथ बिगिन्स टू सीम ए फ्रेंड, मृत्यु तो दोस्त के रूप में नज़र आती है। दैट वन हैज़ ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, जिसको उस दोस्त को, जिस दोस्त को हम भूल जाते हैं, उस दोस्त के भूले हुए दोस्त के रूप में नज़र आती है। देन रिमेंबर्स अगेन, और जिसको हम दोबारा से जल्दी से याद नहीं करते। इन माई ड्रीम, सपने की बात है। लास्ट नाइट आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, और ये सपना जो था वो क्या था कि पहाड़ी के ऊपर और वो गार्डन के अंदर खेल रहा था। एक्चुअली ये सारी भूतकाल की घटनाएं हैं, मेमोरीज़ हैं, जो आज कवि को सपने में याद आ रही हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए टेक्स्ट भी पढ़ दिया है। हमारे ये सभी नॉर्थ इंडिया के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे, न्यू बिगनर्स, न्यू लर्नर्स के लिए एक्सप्लेन कर दिया है। नो डाउट हिंदी पढ़ाते पढ़ाते मेरा गला इंग्लिश से थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है, पर कोई बात नहीं। हमारे हज़ारों बच्चों ने सफलता इसी तरीके से प्राप्त की है। तो बच्चों की सफलता, एक सफल टीचर वही होता है जो जिसमें खुद का नफ़ा नुकसान नहीं दिखता, विद्यार्थियों की सफलता उसको नज़र आती है। तो कोई बात नहीं, मैं बाइलिंगुअल मेथड से ये कर रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह समझेंगे, ये मेरी पूर्ण आशा और विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।